Bismillahirrahmanirrahim. Dear students, in today's lecture, we will only define computer, computer hardware and its software, and few of its advantages and disadvantages. I don't think there is any more need to define computer, but I will just revise it because you already have idea of the definition of computer from the previous classes. Let me just revise the definition of computer. And in today's lecture, we will not explain hardware and software. We will not explain software and its types and hardware and its many multiple parts and their work. We will just define those things. So let me define those things. What do you mean by computer? What is it? As you all of you know that it is an electronic device which can perform the data, which can process the data. A computer is an electronic device that can process data at an amazingly fast speed and produces accurate result. Its accuracies at the top, it produces accurate result. Computer is an advanced form of calculator. It is an advanced form of, because calculator can perform the numerical data. Besides numerical data, computer can process other type of data, just like alphabetic data, alphanumeric data, and so on. It also has the ability to store huge amount of data. You can store up to multiple terabytes of data on a single computer. Computer is an electronic device that accepts data as instructions in the form of programs as input, process the data according to given instructions, and produce information as output. अब देखिए यहाँ पर दो चीजें आ रही, input और output, which is also the lecture of which is also the topics of the next lecture. यहाँ पर दो चीजें आ गई, input और output. Let me read it again. Let me explain it again. Computer is an electronic device that accepts data and instructions in the form of programs as input, process the data according to the instruction, and produce information as output. So what is hardware? In front of you, the screen, I have shared a screen of parts of the hardware components of a computer, hardware parts. It is a tangible, the physical tangible components of forming a computer are called hardware. Hardware is a collective term. It includes not only the computer itself, but also the cables, connectors, power supply units, and peripheral devices such as keyboard, mouse, audio speakers, printers, etc., hard disk drive, RAM, and so on. Just like in front of you, at the top, where the mouse is there, cursor of the mouse is there, pointer of the mouse is there, floppy disk. Floppy disk was used in the old computers, but its concept is now not anymore in the running period of time. The floppy disk drive is not used in the today's computers. So फ्लॉपी डिस्क के बाद फिर जो है वो सीडी, कॉम्पैक्ट डिस्क यानी सीडी, उसके बाद डीवीडी, देन यूएसबी एंड सो ऑन. अच्छा, उसके बाद है हीट सिंक, सीपीयू हीट सिंक. दिस इज ए फैन. ये फैन जो होता है ये प्रोसेसर के ऊपर, मतलब कूल उसका टेम्परेचर को मेंटेन करने के लिए होता है. हीट सिंक, सीपीयू हीट सिंक यानी ये प्रोसेसर के. हार्ड डिस्क ड्राइव व्हिच सेव्स योर ऑल द डेटा. ऑप्टिकल ड्राइव जो सीडी रोम जिसे हम कहते हैं. कॉम्पैक्ट डिस्क, रीड ओनली मेमोरी. तो ऑप्टिकल ड्राइव इज आल्सो merely in the few computers nowadays. आजकल नहीं है इसका इस्तेमाल इतना. पहले कॉम्पैक्ट डिस्क को यूज किया जाता था कोई डाटा वगैरह सेव करने के लिए, कुछ सॉफ्टवेयर वगैरह इंस्टॉल करने के लिए, सिस्टम सॉफ्टवेयर है, विंडोज वगैरह. लेकिन फ्लैश डिस्क ने इसकी जगह ले ली है. उसको मतलब यूएसबी
के थ्रू ही अब हम विंडोज वगैरह इंस्टॉल करते हैं, प्रोग्राम्स को इंस्टॉल करते हैं, या डायरेक्टली थ्रू द इंटरनेट। देन रैम मॉड्यूल्स आर देयर। रैम को भी हम थोड़ा सा और नेक्स्ट जो इनपुट आउटपुट डिवाइसेस में हम इसको डिफाइन करेंगे। तो रैंडम एक्सेस मेमोरी, देन प्रोसेसर्स आर देयर, motherboard which is also called the main board, it connects all the parts, all the components of a computer। ये जो motherboard है, इस पे हम सारे जितने भी कंप्यूटर के कंपोनेंट्स हैं, चाहे वो पावर सप्लाई है, चाहे वो कोई फैन है, चाहे वो कोई फ्लॉपी डिस्क है, चाहे हार्ड ड्राइव है, चाहे ऑप्टिकल ड्राइव है, रैम है, वो सारे के सारे पार्ट्स इस बोर्ड के ऊपर कनेक्ट होते हैं। तो हमारा सीपीयू एक सिस्टम बन जाता है, एक कंप्यूटर सिस्टम बनता है। तो ये सारे पार्ट्स जो है, इस पे प्रिंटर का पार्ट भी है, प्रिंटर की पोर्ट भी होती है इसमें, माउस की पोर्ट भी होगी इसमें, एंड सो ऑन, मॉनिटर वगैरह, और सीपीयू जो आपका एलसीडी है उसकी भी, सब हर चीज की तकरीबन सारे जितने भी पार्ट्स होते हैं, वो सारे पार्ट्स की पोर्ट्स इस पर होती है। हम प्लग करते हैं और से प्लग इन करके हम अपने सिस्टम को बनाते हैं। इसी तरह ये पावर सप्लाई है, फिर ये सिस्टम कूलिंग फैन है। ये सिस्टम कूलिंग फैन, दिस cools the temperature, this maintains the temperature of the whole system। So ये कुछ parts मैंने आपको बताए हैं। Then software, what do you mean by software? Software and hardware are, एक कंप्यूटर जो है वो सॉफ्टवेयर और हार्डवेयर, they both are important parts of a computer। अगर ये सॉफ्टवेयर नहीं है तो हार्डवेयर is just like a dead body। और कंप्यूटर्स को सॉफ्टवेयर ना हार्डवेयर, सॉफ्टवेयर नहीं है तो हार्डवेयर की कोई वैल्यू नहीं है, और अगर हार्डवेयर नहीं है तो सॉफ्टवेयर इज यूजलेस। सो software refers to the program that instructs the computer what to do। Software is a general name given to all the program instructions and data necessary to make the computer usable। The term software refers to the non-physical elements of a computer system, that is Windows, Microsoft Office, एंटीवायरस आर ऑल द एग्जांपल्स ऑफ ए सॉफ्टवेयर। यहाँ पर आपके सामने एक स्क्रीन पर एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर है और ऑपरेटिंग सिस्टम सॉफ्टवेयर। सॉफ्टवेयर की भी टाइप्स होती है, एक सिस्टम सॉफ्टवेयर होता है, दूसरा एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर। सिस्टम सॉफ्टवेयर में क्या होता है, यू हैव विंडोज, जैसे विंडोज 7 है, विंडोज 8 है, विंडोज 10 है, विंडोज एक्सपी एंड सो ऑन, जो ऑपरेटिंग सिस्टम्स होते हैं, जो आपके कंप्यूटर्स को मतलब जो है बेसिक जो कंप्यूटर के सिस्टम्स होते हैं, जो कंप्यूटर के सिस्टम को चलाने के लिए आप। उसके बाद एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर, जो एडिशनल सॉफ्टवेयर आप बाद में इंस्टॉल करते हैं टू मेक द कंप्यूटर यूजफुल। जैसे जीमेल आ गया यहाँ पर सामने आपके है, फिर ड्रॉप बॉक्स है, उसके बाद है गूगल ड्राइव है, यूट्यूब है, नोटबॉक्स है, एमएस ऑफिस है, गेम्स है, कोई मीडिया प्लेयर है, इन सो ऑन। ऑफिस के वर्क के लिए आपको एक्स्ट्रा सॉफ्टवेयर इंस्टॉल कर लेते हैं, वो एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर हो जाएगा। सो कंप्यूटर कैन प्रोसेस डेटा फास्टर देन एनी अदर मशीन डिजाइन टू परफॉर्म ए सिमिलर टास्क, and computer can tirelessly perform the same operations millions of times in exactly the same way without getting bored and tired, and the way a human clerk would be। जाहिर है क्लर्क तो थक जाएगा थोड़ा सा काम करके, बट एक कंप्यूटर will not tire and will not get bored। A computer's high speed processing is accompanied by high accuracy results। No other system can have much accuracy as as compared to computer system। Computer can make decisions based on some direction conditions and take alternative course of action accordingly। इसी तरह कंप्यूटर के देयर आर मल्टीपल बेनिफिट्स हैं, बहुत सारे इसके बेनिफिट्स हैं, डिसएडवांटेजेस भी हैं। तो इन द today's globalized and technological era, computer is useful to do a work very easily, smoothly, very fast। Computer has made an impact on society। It has changed the angle of life, the way of living, the standard of living has been changed by the computer। अब तो हर चीज, मतलब आप जो हम शॉपिंग्स भी कर रहे हैं तो कंप्यूटर के जो मोबाइल आपके हाथ में, ये दिस इज आल्सो द फॉर्म ऑफ कंप्यूटर। The use of computer technology has affected every part of life।
People are using a computer to perform different tasks easier. A big advantage of computer is it saves time and efforts and reduces all the overall cost to complete a particular task. Advantages में और भी बहुत सारी हैं इसकी. They are used to for records of data for their banks and organizations are using for the record of the data of the customers. For their customers, bank is using computer for maintaining accounts and managing financial transactions. They are providing facilities of online banking. अब just like अब किसी भी प्राइवेट है या कोई भी किसी किस्म का भी बैंक है, उसकी प्ले स्टोर पे आप एप्लीकेशंस को डाउनलोड करते हैं और अपने अकाउंट्स को घर बैठे ही at the comfort of your home you can use the online banking, so you can do the transactions at the comfort of your home. आपको बैंक टाइम की बाउंड नहीं है. यू आर नॉट बाउंड के 9 बजे आपने पहुंचना है और वेल ड्रेस्ड होकर जाना है और वहां पर आपने जो भी ट्रांजेक्शन्स करनी है, किसी को ऑनलाइन ट्रांसफर करने हैं या कुछ भी आपने काम करना है, यू कैन डू एट द कंफर्ट ऑफ योर होम. आप किसी भी 24 आवर्स में किसी भी टाइम कहीं पे भी बैठे ही कर सकते हैं. Customers can check their account balance also by using internet and by using their apps. Different tasks are performed automatically by using computers. It reduced the need of people. Due to this, unemployment in the society increased. This is one of the biggest disadvantage of computer. क्योंकि एक काम जो है वो 50 बंदे करते थे, वो एक छोटी सी मशीन ने करना शुरू कर दिया, तो वो अनएम्प्लॉयमेंट वहां पर हो गई है. इट इज विदाउट एनी डाउट कि मशीनरी ने जो है मशीनरी टाइम सेव करती है और एफर्ट्स जो है कम एफर्ट्स से बहुत सारा काम ले लेती है. तो इस तरह क्या होता है, मशीनरी से अनएम्प्लॉयमेंट बढ़ती है क्योंकि एक मशीन कई लोगों का काम करती है. डिसएडवांटेज में ये चीज आ जाती है. और भी बहुत सारी डिसएडवांटेजेस हैं. कंप्यूटर्स की बहुत सारे डिसएडवांटेजेस हैं. फाइनेंशियल डिफिकल्टीज में make it difficult for some students to access important coursework, while other students may use computers to play games or chat. Students replace a paper pen with a computer for education. Handwriting skills may suffer. अब देखें एक स्टूडेंट है, वो सारा दिन टाइप करता है, उसको प्रिंट करता है, असाइनमेंट्स बनाता है, डाउनलोडिंग करता है वहां से कहीं से भी या कोई मल्टीपल सोर्सेज को यूज करता है, तो वो क्या होगा, उसकी हैंड राइटिंग स्किल्स definitely will suffer the handwriting skills. Learners benefit from increased brain activities when writing new information by hand. अब जब आप कुछ लिखते हैं, बहुत सारी चीजें, जब आप मैथ्स की प्रैक्टिस करते हैं, तो आप जब खुद से हैंड रिटन से करते हैं, बाय हैंड आप मैथ की प्रैक्टिस करते हैं, तो आपका जहन उससे खुलता है, आप बहुत सारी चीजों को सोचते हैं. वेयर इन कंप्यूटर, जब आप कंप्यूटर या किसी सॉफ्टवेयर से कोई प्रॉब्लम सॉल्व करवाते हैं, तो वो आपका दिमाग काम नहीं करता. आप अपने जो है वो दिमाग पे ज्यादा जोर नहीं डालते, तो आप प्रैक्टिस इतनी नहीं होती आपकी, और प्रॉपरली जो है वो कंप्यूटर ही आपका काम कर देता है. जस्ट लाइक मैथ्स है या केमिस्ट्री, मोस्ट कंप्यूटर प्रोग्राम इंक्लूड ए स्पेलिंग एंड ग्रामर चेक एंड स्टूडेंट्स माइट डिपेंड ऑन द कंप्यूटर. सो करेक्ट स्पेलिंग एंड ग्रामर एरर्स, टू करेक्ट स्पेलिंग एंड ग्रामर एरर्स. अब they are nowadays, we are not they are, we all of us, we are relying on the spelling check from the Google. किसी चीज की स्पेलिंग देखनी होती है तो हम गूगल से कर लेते हैं, या कोई ग्रामर की कोई मिस्टेक हो तो हम वहां से चेक कर लेते हैं. दिस इज बेनिफिट भी किसी फॉर सम एक्सटेंड, आप इसे कह सकते हैं बेनिफिट है, बट दिस इज आल्सो लेकिंग अवर ब्रेन एक्टिविटी. हम जो है वो स्पेलिंग और ग्रामर्स के लिए भी रिलाय कर रहे हैं इस पे. And many people are using for the negative purpose. These are negative purpose are they play games and chat for long period of time, that causes the wastage of time and energy. Especially the young generation is now spending more and more time on sites like Facebook, Twitter, इंस्टाग्राम एंड सो ऑन. बहुत सारी मल्टीपल साइट्स है जिस पर वो ज्यादा से ज्यादा, मैं ये नहीं कहूंगा सब, बट मेजॉरिटी ऑफ द यूथ इज वेस्टिंग देयर टाइम ऑन सच टाइप ऑफ साइट्स. एंड
I have already discussed number of unemployment भी बढ़ती है इससे. इस तरह जो है वो क्राइम बढ़ जाता है, हैकिंग बढ़ जाती है, हैकिंग हो गई है, जो है वो साइबर क्राइम बढ़ गया है. साइबर क्राइम भी एक इसका बहुत बड़ा डिसएडवांटेजेस है. ओवरऑल कंक्लूसिवली अगर हम कहेंगे, कंप्यूटर प्रोवाइड्स मैनी एडवांटेजेस स्पेशली टू बिजनेस. इट मेक्स बिजनेस मोर एफिशिएंट इन मीटिंग customer needs and handling business plannings. The disadvantages to relying heavily on computers is that there is there are multiple disadvantages. Advantages भी हैं अगर आप इसको देखें. It depends upon the use of a device, whether you are what is the purpose of use. अब, so in the next lecture we will discuss the other topic, which will be hardware and its components, input and output devices, inshallah. So inshallah, meet you in the next lecture. Thank you. If you have any kind of question, you may ask in the group. You may send your questions in the group and you may ask your questions. And in case of any confusion, you may contact me. Thank you.